Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई आ एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एथिरे मोड विषय रे पढिबा सो मोड कहिले कोन या को आमे ओडिया रे जदी कहबा होची बारंबारता सो नारु जणा पडुची मोड इज द वैल्यू व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली in a set of observation and around which the other items of the set cluster densely. Okay, so suppose आमे example आड़ को जिबा suppose किछरा statement अछि देखो जदि आमे कहबा गोटे दुकान रे एवरेज शू साइज जोटा बिक्री होची इट इज ऑफ नंबर 7 सिमिलरली यदि आमे कहबा एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन मेल पर्सन is 5 feet 6 inches or 1.68 meters approximately or average collar size of the shirt which is sold in a ready-made garment is 35 centimeter. Average students in a professional college spends rupees 2500 reach 2500 per month. So ei सब जते एवरेज बोली कहला दिस एवरेज इज नाइदर मीन नॉर मेडियन याकू आमे मीन भी कहबानी किबा मेडियन भी कहबानी कोन एटा होची मोड ओके सो हाउ यू विल कंप्यूट और कैलकुलेट दिस मोड देखो जेतबेले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आसी जाउची आमे बुझिबा जे मोड होची सेई variable pi value okay which is corresponding to the maximum frequency okay and this method can be applied with ease and simplicity if the distribution is unimodal distribution that is if it has only one mode okay unimodal uni means one so one mode जदि अछि easily तमे एई method को apply करि परिबो in other words this method can be used with convenience if there is only one value with highest concentration of observations okay so एठी देखो ग्राफ भी तमे देखि पारुछो आमे एठी वेरिएबल x को नउछु x एक्सिस रे फ्रीक्वेंसी को नउछु y एक्सिस रे दिस इज आवर ग्राफ सो ए भलिया जो जगह रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू मैक्सिमम हैला सेही करेस्पोंडिंग x वैल्यू को आमे कहिबा मोड तार दुई साइड रे देखो फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअसली कमी जाउची ओके अच्छा सो एठी गुटे एग्जांपल आमे डिस्ट्रीब्यूशन रो देखिबा यदि x रो देखो वैल्यू दे दीची करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी दे देला ताले x वैल्यू तो 1 2 3 4 अप टू 9 अछि फ्रीक्वेंसी देखो 3 1 18 25 40 ओके 40 एटा मैक्सिमम वैल्यू ता तापरे 30 22 10 6 okay so here the maximum frequency is 40 and therefore the corresponding value of x which is 5 40 against 5 achi this 5 is nothing but the value of the mode okay and in case of a frequency curve I am already dekhila mode is representing the peak value of the curve okay किंतु जदि एटा यूनिमोडल न हे कि मॉडल क्लास ही थांता माने in case of continuous distribution the class corresponding to maximum frequency is called model class and the value of the mode now can be obtained by a interpolation formula which is given by mode equal to L plus h into f1 minus f0 divided by f1 minus f0 minus f2
minus f1, or you can simply write it as L plus h into f1 minus f0 divided by 2 times of f1 minus f0 minus f2. So eଠି L kono, it is the lower limit of the model class. F1 hochi frequency of the model class. This is nothing but the maximum frequency. F0 hela frequency of the class preceding the model class. Now F2 hela similarly frequency of the class succeeding the model class. H ହେଇଗଲା ଏଠି magnitude of the model class जोटा होची तमरो class interval, right? There are certain remarks which you can read by yourself, like देखो जदि frequency distribution आमे देखिबा, it must be continuous one हेबा कथा, okay? Our class interval must be uniform throughout, okay? However, जदि आमे mode calculation करूछु, केतेरा situation रे mode calculation हेई परिबो नाही. को जगह रे, if the maximum frequency is repeated or approximately equal concentration is found in two or more neighboring value. जदि repeat ହେଇଛି maximum frequency ताले problem हबो. किंबा maximum frequency occur either in a very beginning or at the end of the distribution. एथिरे भी problem आसे. किंबा if there are irregularities in the distribution, okay? So याको आमे आकु बुझिबा upcoming examples रे. Next point कहूची remarks रो जे जदि आमे apply करूचु गोटे method कोन, method of grouping which will give the model class, okay? Model class पाइबा पई आमे गोटे method use करिबा grouping. केमती करा जाय example solve कला बेले better बुझी परिबो. So it does not corresponding to the maximum frequency, okay? Model class maximum frequency को ही corresponding करिबो सेमती किछि माने नाही, okay? Sometimes it does not. So जदि maximum frequency हला f1, okay, then frequency actually of the model class is not the maximum one. Then in some situation we can get this value 2f1 minus f0 minus f2 to be equal to 0. That means एबे जो ऊपर हमें फॉर्मूला देखुतला एठी ए डिनोमिनेटर टा 0 हेगला माने ए क्वांटिटी को ये कोन करिवो infinity, mod becomes infinity, which is not possible. So एई केस रे हमें कोन करिबा mod पई एठी तळ क्वांटिटी रो भी हमें मैग्नीट्यूड निजबा एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके? आ ऊपर भी, राइट? ताले एबे हमें इजीली कैलकुलेट करि परिबा, ओके? अच्छा, सो एई भलिया गुटे देखो एठी एग्जांपल दोची. एठी x जोटा कि तमरो वेरिएबल ताकू दे देला, फ्रीक्वेंसी दे देला, ओके? देखो फ्रीक्वेंसी 4 6 5 10 20 22 24 6 2 1. सो एथि पई केवल आमे जदि देखिबा 24 हे जाउची जे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ताले एटा होची मॉडल क्लास, एमती माने नुह, ओके? सो एथि पई हमकू मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई करबा को पड़िबो. जेमती कहली अपकमिंग एग्जांपल्स रे को बुझिबा. वर्तमान पई एतकी जानि रखो जे आफ्टर अप्लाइंग द मेथड ऑफ ग्रुपिंग जोटा कि अप टू 3 क्लासेस एट ए टाइम अप्लाई कला परे जणा गला जे एई जो क्लास 60 to 70 होची एक्चुअली द मॉडल क्लास, ओके? सो हमें एबे f1 f0 f2 वैल्यू पाई गला. ताले देखो एठी जदि यार वैल्यू जो तमरो डिनोमिनेटर रे थिला 2f1 minus f0 minus f2, it is found out to be 0. ताले एबे हमें ऊपरे जो देखुतला मैग्नीट्यूड बा एब्सोल्यूट वैल्यू नै की ही करबा को पड़िबो, सो दैट मोड आसी जिवो 65, ओके? अच्छा, there are certain merits and demerits of mode. जदि हमें briefly कहिबा ताले merits कोन, mode is very easy to calculate and understand. Mode is not at all affected by extreme observations. Then it can be conveniently obtained in case of your open classes. Open end classes रे हमें मध्य मोड पाई परिबा, ओके? किंतु मीडियन आउ मीन कैलकुलेशन रे हमें किछरा प्रॉब्लम फेस करू खास करी, ओके? तापर किंतु मेरिट्स परे कितरा डिमेरिट्स भी अछि, लाइक मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, ओके? तापर मोड is the value of the variable x corresponding to the maximum frequency, and it is not based upon all the observation of the series. Then mode is not suitable for
further mathematical investigation, and as compared with the mean, mode is affected by greater extent जदि हमर fluctuation आछी sampling रे. ओके, सो ये सब केतेटा डिमेरिट्स रहउची, राइट. अच्छा, सो फर्दर जदि देखिबो केतेटा यूज मध्ये अछि मोड रो. ओके, जोटा कि ऑब्वियसली इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी मोड स्पेसिफिकली आमे यूज करि परिबा इन ऑर्डर टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर साइज इन अ स्टडी रिलेटिंग टू द सपोज सम मार्केटिंग, सम ट्रेड, सम बिजनेस इंडस्ट्री एटसेट्रा. तापरे ग्राफिकली आमे मोड को लोकेट करि परिबा. ओके, यू कैन रीड दिस बाय योरसेल्फ. प्रॉब्लम सॉल्व कला बेल को या विषय रे आमे डिटेल देखिबा. ओके, now this is very important. What is the relation between the mean, median and mode? Okay, so in case of symmetrical distribution, ए जो तीनटा क्वांटिटी mean, median, mode आमे जे देखिबा all these three are equal यदि symmetric distribution होची. ओके, किंतु जदि moderately asymmetrical बा नॉन सिमेट्रिकल बा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहउची, जोटा हमें स्क्यूनेस टॉपिक रे डिटेल पढ़िबा. हियर द मीन एंड मोड यूजुअली lie on the two ends of the median. Okay, and it lies in between them, right, and they obey the following important empirical relationship जोटा कि प्रोफेसर कार्ल पियर्सन बाहर करथिले. ओके, this is the required relation. Mode is equal to mean minus 3 times of mean minus median. याकू जदि तमे आकू सॉल्व करी करी जीवो, फाइनली टिके सिंप्लीफाई कला परे तमे गुटे इजी फॉर्मूला टे पाई जीवो, जोटा होची मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ओके, आज जेमती हमें ऊपर डिस्कशन करूथिला. देखो, दिस इज द ग्राफ. ग्राफ रे हमरो एठी आसी जाउची having the maximum frequency, this is our mode, right. तापरे मीडियन जोटा कि दुई भाग रे भाग कर दोची ग्राफ को. ओके, दिस वन इज द मीडियन एटा. तापरे एठी हमरो मीन रहउची, राइट. ओके, तापरे नेक्स्ट एबे आकू बढ़िबा. एई ग्राफ रो गुटे जिंस हमें देखिया को पाउछु जे मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन व्हिच इज ग्रेटर देन द मोड, राइट. अच्छा, now moving on, let us try to solve some of the problems. So the first problem कहूची find the mode. distribution दे देला हमको. ओके, सो ए जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको दउची, देखो रिपीटेशन आछि. यस, रिपीटेशन मतलब एटी फ्रीक्वेंसी हमको गणिबा को पड़िबो. सो जेते सब इंडिविजुअल क्वांटिटीज को हमें निगला वेरिएबल x ताकू लिखिबा 2 3 4 5 6 7 केते थर जार रिपीटेशन हिची ताकू हमें लिखिदेला. सपोज एटा होची मार्क. ओके, सो केते हमर फ्रीक्वेंसी आसिला अकॉर्डिंगली 2 7 5 1 1 1. ओके, सो एतिरु तमे देखिया को बहुचो जे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आछि केते 7 which correspond to x equal to 3. so this is our mode. तापरे सेकंड पार्ट पचरछि, if the relation between the two variables x and y एगला 2x plus 5y equal to 24 and the mode of y is 4, find the mode of x. okay, ठीक अछि. so आमे कोन करबा एठी mode of y जोटा क्वेश्चन देछि it is equal to 4 आउ रिलेशन कोछि 2x plus 5y equal to 24. ताले x रो वैल्यू केते आसिला half times of 24 minus 5y. okay, now if x and y are corrected by this relation y equal to ax plus b जोटा होची गुटे straight line, then the frequencies of the variable y are the same as the frequency of the corresponding values of the variable x. Hence modes of the variable x and y are also connected by the same equation, that is y equal to ax plus b, or mode y equal to mode of ax plus b, or a times of mode x plus mode plus b. okay, so हमें बे मोड x बाहर करि परिबा ई रिलेशन टू जोटा आसीगला हमरो
after putting the value will be equal to 2. Moving on to the next problem. एठी बाहर करने को कोई तीन टा जिनस मीन मोड आउ मीडियन डाटा हमको अकॉर्डिंगली दे देला वेट इन केजी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके ताले एथि पई हमको निहाती भाबरे टेबल करबा को पड़िबो दिस इज आवर वेट देखो किंतु एठी हमर कटि जाइछि 93 रु 97 एटा 98 रु 102 सो हमको फास्ट कोन करबा को पड़िबो याकू जोड़ीबा को पड़िबो एई वेट को क्लास बाउंड्री हिसाब रे हमको याकू आनिबा को पड़िबो सो 92.5 रु 97.5 करि हबो सिमिलरली सेकंड टा हिजबो 97.5 रु 102.5 ओके तापरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिबा आगु हम एठी मिड वैल्यू लिखि परिबा जोटा यार मझिरो वैल्यूटा ओके देन वी कम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ओके एमती फ्रीक्वेंसी न नहीं कि हमें सिंपली जोटा कि स्मॉल डी हमें यूज करथला मीन कैलकुलेशन बेल को x माइनस 110 गोटे मझी वैल्यूटे नहीं जबा फ्रीक्वेंसी रो x माइनस 110 डिवाइडेड बाय 5 5 कहीं की बिकॉज एठी h रो वैल्यू देखो 5 आछी which is the magnitude of the class interval then we have ft then we have the cumulative frequency less than dash okay एति की करि साला परे ऑलरेडी मीन कैलकुलेशन तमे जानि छ by using this formula okay then एठी मोड रो कैलकुलेशन जोटा कि हमें देखिबा को पाउछु maximum frequency आछी एठी 17 is corresponding to 107.5 to 112.5 ए क्लास रे अछि सो यार लोअर वैल्यू टा हला एति की ताको पुट कर देला बाकी सब f1 तो आसी गला 17 f0 देखु छ एटा प्रीसीडिंग that will be 12 then f2 will be 14 जोटा कि सक्सीडिंग ताको सब पुट कर देले 110.625 kg आसी गला result which is the mode value then we have the median value n by 2 बाहर कला then you have the cumulative frequency just greater than 30.5 is 37 this one hence already our calculation jani cho by using this formula okay the median class ruparla finally our value asigla 110.59 kg okay then moving on to the next problem calculate the median of the following distribution okay a distribution by median बाहर करो and तापर पचारुछि is it possible to calculate the arithmetic mean if possible calculate it and then obtain the estimated mode okay so a distribution को हमें एबे टेबुलर डाटा रे जेंति हमें प्रीवियस क्लास रे कला से बढिया लेखिबा ओके सो कंप्यूट करिबा जोटा एनुअल सेल्स हिची तार पुणी मिड वैल्यू आसीगला करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी आसीगला द लेस देन cumulative frequency एठी हमें लिखि देला याको right then we have the d value here and the product of frequency and the d value right so एति की लिखि सारला परे एबे मीडियन कैलकुलेशन करिबा इजीली यार फार्मूला ऑलरेडी जानि छ प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी डिस्कस करि सारछि then we have the mean calculation एटा भी हे परुछि it is also possible to calculate the mean now एबे हमें मोड जदि कैलकुलेट करिबा हमें एम्पिरिकल रिलेशन भी यूज करि परिबा बिकॉज़ ऑलरेडी हमें मीडियन आउ मीन पाइ सारछु सो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन just put the respective values you will get this much of answer okay then moving on to the next problem एठी कहूची construct the frequency distribution okay construct the frequency distribution showing the frequency with which words of different number of letters occur in the extract reproduced below okay omitting the punctuation marks treating as the variable the number of letters in each word and obtain the median and the mode of the distribution okay now एठी कहूची जोटा हमको दउची a candidate at the time of applying for registration as a student of the institute should be not less than 18 years not less than 18 years of age and have passed the intermediate examination of a university
which is constituted by law. Okay, in India, all examination recognized by central government as equivalent there too. Okay, or national diploma in commerce examination or diploma in rural service examination conducted by the National Council of Rural Higher Education. ओके एते लंबा चौड़ा यार description ये कहला ओके ताले एबे सॉल्यूशन आड़ को जिबा देखो वेरिएबल x एठी कोन रिप्रेजेंट करछि इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड ओके एई जो फ्रेज ता देला एई फ्रेज भीतर हम देखिबार अछि ओके सो फॉर एग्जांपल इन द वर्ड कैंडिडेट कैंडिडेट केतेटा लेटर अछि 9टा लेटर 9टा लेटर हम लिखिदेला नाउ हियर x is corresponding to the word candidate which is 9 thus replacing each word by the number of letters in it the distribution of the number of letters in each word हमें याकू एबे लिखि परिबा ओके जो हिसाब रे ई फ्रेज टा हमको देइतिला ताकू खाली नंबर ऑफ लेटर्स रे हमें सही हिसाब रे लिखिदेला ओके एतिकी लिखि सारला परे हमें वेरिएबल x रो वैल्यू पाइगला जोटा कि मिनिमम वैल्यू होउची 1 मैक्सिमम वैल्यू होउची 12 केते थरो यार आछि फ्रीक्वेंसी हमें बाहर करबा रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी पाइगला देन वी हैव द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ताले एबे मीडियन हमें इजीली कैलकुलेट करि परिबा नाउ एई जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किंतु देखिबो जदि एटा रेगुलर नुहे ओके दिस इज नॉट अ regular frequency distribution okay hence the value of mode calculation location हमको याकू बाहर करके पड़िबो बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ओके ग्रुपिंग मेथड हमें एबे यूज करबा जोटा हमें प्रीवियस डिस्कस करूथिला एबे डिटेल आडकू हमें जिबा ओके सो इठी जेहेतु रेगुलर नुहे वी कैन नॉट से दैट द मोड इज 2 बिकॉज इठी जदियो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होउची 19 एर रेस्पेक्टिव आसी जाउची जदी एठी वेरिएबल 2 किंतु एटा जे मोड हेतिबो तारो किछि सेंति माने नहीं ओके सो हियर we apply as I said the method of grouping and we try to locate the mode and एई जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग को एबे हमें चलो बुझिबा देखो हमें प्रथमे कोन करिबा x रो वैल्यू जोटा अछि 12 टा वैल्यू देइछि यू कैन सी एई 12 टा जाको वैल्यू को हमें लिखि देला तारो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम 1 कॉलम टोटल 6 टा हबो मन रखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम 1 रे हमें रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को लिखला ओके एबे बुझो कॉलम 2 को केमती लिखिबा कॉलम 2 मतलब एठी हमें एई फर्स्ट 2 को कंबाइन करबा 19 जोगो 3 हेगला 22 ओके कर्ली ब्रैकेट देखि परछो सो सिमिलरली नेक्स्ट दुईटा हबो 12 और 4 रो कॉम्बिनेशन दैट इज विल बी 16 तापरे 4 और 3 7 7 6 13 ऑनवर्ड्स सो कॉलम 2 तयारी हेगला तापरे एबे कॉलम 3 तयारी करबा कॉलम 3 पई कोन करबा ऊपर ए थिबा ए 3 को छाडी देबा ओके तळे सबा तळे थिबा 2 को छाडी देबा ओके 19 और 12 को जोगो करबा वी विल गेट 31 सिमिलरली 4 और 4 को जोगो करबा 8 7 3 10 ओके एई बळा चलला एटा आसिला जेतळे तमे दुईटा पर्यंत वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी को ग्रुप करथलो किंतु जदि तमे एबे तीनटा को ग्रुप करिवो 3 19 और 12 एतिकी जोगो करले पाइबो 34 सिमिलरली 4 4 3 पाइगलो 11 ऑनवर्ड्स लिखि चलिबो ओके तापरे पुनी सेया करिवो उपरु गोटे छाडी दियो 3 को आ तळु एठी आमे धरो छाडी देला गोटे ओके ताले एबे 19 12 और 4 याकू जोगो करले पाइ जेबो 35 सिमिलरली 4 3 और 7 पाइगलो 14 राइट ए बळा चलला तापरे एबे ऊपर दुईटा को छाडी देबा हमें तळु भी दुईटा छाडी देबा ओके ताले एबे ए तीनटा जो आसिला 12 4 4 आसिगला 20 3 7 6 16 एंड फाइनली एठी हमरो आसीबो 3 4 और 5 मु टिके एठी भूल कहिछि तळु गुटे छाडबा को पड़िबो ओके सो 3 4 और 5 जेमती हमरो तीनटा कॉम्बिनेशन हबा कथा
सो 3 4 5 आसीगला 12 ओके सो ये हिसाब रे आमे 6टा कॉलम तैयारी कला कहीं एमती करछु इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मोड ओके जोटा कि हमर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नुहे ओके सो जहाँ जहाँ ये लिखाई ऑलरेडी मु ऊपर तुमको डिस्क्राइब कली एबे एनालिसिस आड़को जी एनालिसिस टेबल तैयारी करिबा सो कॉलम नंबर आमे लिखिबा टोटल 6टा कॉलम अछि ओके सेतिकी जो कॉलम रे पुणी वापस आसीबा ऊपर टेबल को एठी गोटे जिनस मार्क कर बही रे जदिओ कौन कर सबू कॉलम रे मैक्सिमम वैल्यू को बोल्ड कर तुम कौन कर एमती राउंड भी बुलाई पार मैक्सिमम वैल्यू गुड़ा को ओके जेतिकी सबू कॉलम रे मैक्सिमम वैल्यू आसला ताको राउंड बुलाई देलो सपोज एठी तुम देखा पाउछ जे फर्स्ट कॉलम रे थिबा मैक्सिमम वैल्यू केते अछि दिस इज 19 ओके ना यू सी 19 तुम जदि देखिबो एटा करेस्पोंड करूची x रो को वैल्यू को ओनली 2 ओके तापरे सेकंड कॉलम रो मैक्सिमम वैल्यू जदिओ 22 एटा दुईटा वेरिएबल रो फ्रीक्वेंसी रो कॉम्बिनेशन अछि सो से दुई वेरिएबल केते 1 आउ 2 जार रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 3 आउ 19 थिला ओके सो 1 2 हिजबो 22 पाई वैल्यू ओके सो एई जो डाटा गुडा को एनालिसिस टेबल रे हमको लिखिबा को पड़िबो जेंति कहली 19 एटा फर्स्ट कॉलम रे थिला एथि पई हमें देखिला जे x रो वेरिएबल थिला 2 तापरे 22 सेकंड कॉलम रे एथि पई हमें देखिबा को पइला x रो 1 और 2 को हमें कंबाइन कला सिमिलरली बाकी जिते सबू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रो कॉम्बिनेशन देखिबा को हम यदि पाउछु ताले ए बडा कॉम्बिनेशन आसीबो ओके सो केते केते थरा आसिला देखो 1 1 दुई थरा आछि टोटल हमें लेखि लेखि जिबा ओके तापरे एठी 2 2 2 2 एमती पांच थरा आछि 3 3 3 3 चारि थरा आछि ओके ए सब डाटा को हमें लिखिला ओके सो एठी देखिबा को पाउछु जे 2 ही मैक्सिमम टाइम्स आसीची ओके तेणु करी हमें कहि परिबा दैट मोड इज 2 ओके जदिओ स्टार्टिंग प्रॉब्लम रो जणा पड़थला जे 19 होची मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तार सीधा रे एक्स वेरिएबल 2 ही थिला किंतु सेटा एक्चुअल मेथड नुहे बिकॉज द डाटा द रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट इरेगुलर सो एबे हमें ग्रुपिंग मेथड रे याको कंफर्म कला जे मोड वैल्यू होची एठी 2 राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन you need to calculate the mode from the following data okay mark दे देला below 10 below 20 ये बड़ा दोची number of students रो up to below 90 okay एई जते सब डाटा को हमें ठीक भाव रे टेबुलर डाटा करिकि लिखि देला राइट ए हिसाब रे फ्रीक्वेंसी आसी एति की तापरे ग्रुपिंग टेबल को अगेन जिबा हमें बिकॉज एठी डाटा अगेन देखो फ्रीक्वेंसी 4 2 18 22 21 19 10 3 1 ओके सो ग्रुपिंग टेबल कर देले बेटर ऑलरेडी बतै सारी को हिसाब रे ग्रुपिंग टेबल हबो जेते सब मैक्सिमम वैल्यू को हमें सर्किल बुले बुले जिबा एटा देखो एठी दुईटा जाको 40 40 समान आसी जेची ओके तापरे जेते सब मैक्सिमम वैल्यू हमें सर्किल बुले देला अच्छा नाउ लेट अस कंप्यूट द मॉडल क्लास ओके मॉडल क्लास कॉलम 1 देखिया को पाउछु जे मैक्सिमम वैल्यू आछि 22 22 पाई हमरो एठी क्लास होची केते 30 टू 40 30 टू 40 हमरो एठी हम लिखि देला राइट तापरे नेक्स्ट हला 40 40 पाई हमें देखिबा एटा कॉम्बिनेशन करूची 18 और 22 रो मध्य और 21 और 19 रो मध्य माने एठी टोटल क्लास टोटल 40 पाई चारिटा आसीबो 20 रु 30 30 रु 40 40 टू 50 एंड 50 टू 60 ओके देखो चारिटा जाक लिखा है राइट सो अकॉर्डिंगली बाकी सब पाई भी तमे रेस्पेक्टिव क्लास लिखि परिबो ओके तापरे केते क्लास रो रिपीटेशन होइछि त 20 रु 30 दुई थर आछि हमें लिखि देला 30 रु 40 पांच थर आछि 40 रु 50 पांच थर आछि ओइ हिसाब रे हमें सब लिखिला सो एई टेबल रु हमें देखिया को पाउछु जे 30 रु 40 और 40 रु 50 एटा होची रिपीटेड नंबर रे आसी गला ओके मैक्सिमम नंबर होची यार केते 5 और 5 each right so here we cannot decide about the model class कोटा model class तो हमें बाहर करि परिबा नाही thus
even the method of grouping भी ऐसे fail मारला, right? So we say that here the above example, the mode is ill defined and we can locate it by the empirical formula. Better हमें एबे empirical formula आड़को जिबा जोटा कहूची 3 times of median minus 2 times of mean. ताले एबे mean calculation करिबा median calculation करिबा तापरे हमें एबे mode calculation करि परिबा, right? देखो mode रो final value आसीगला 41.3. so actually mode टा को क्लास रे थिला 40 ରୁ 50 रे, ओके। सो एथरो हमें एबे जानि पारला। तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम आड़को जिबा। देखो एठी कहूची in 500 small scale units the return on investment ranging from 0 to 30%, no unit sustaining any loss. 5% of the units had return ranging from 0 to 5%, with 15% of the units earning returns between 5 to 10%. Now, the median rate of return was 15% and the upper quartile was 20%. Now, the uppermost layer of returns of 25 to 30% was earned by 50 units. Now, put this information in form of the frequency table and find the rate of return around which there is maximum concentration of units. Maximum concentration माने हमको indirectly ये mod पचारिछि। So on the basis of the given information हमें प्रथम कथा तो जानि पाउछि जे 500 होछि total number of units. Now number 1 कहूछि number of units with returns ranging from 0 to 5%. Okay, that is 5% of 500. So it आसीगला 25. Similarly, number of units with returns between 5 to 10%, that is actually 15%. Okay, because 5% and 10% कहूछि. So 15% of 500 which is 75. तापरे median rate of return which is 15%, that is we have 50% of n, so that we have 250 units having return less than or equal to 15%. Okay, so एतिकी हमको दे देला data. Now the number of units with return exceeding 10% but not exceeding 15%, एटा कहूची केते 250 minus 25 plus 75 आसीगला हमर वैल्यू 150. upper quartile माने Q3 को बुझिबा, which is given here to be 20%, so that 3n by 4 equal to 3 into 500 by 4, that is 375 units have returns less than or equal to 20%. Okay, now the number of units with returns exceeding 15% but less than equal to 20% will be how much? 375 minus 250, so that it will be 125. Similarly, the number of units with returns between 25 to 30% given by the question is 50. Okay, जोटा एठी देछि. Hence, by the residual balance, केते बड़का balance रहिला, the number of units with returns between 20 to 25% एबे calculate करिबा जदि final year value आसीबो 75. So ए जो given information को summarize करिबा frequency distribution table रे, ताले देखो return को हमें निगला एठी number of units को एठी. Okay, so 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ए भलिया 25 ରୁ 30 जाय लेखिला आउ respective number of units को लिखिला. So एठी maximum value आछि 150, model class हमर आसीगला एठी 10 to 15. Okay, so that easily एबे mode हमें calculate कर दे पारला, which is coming out to be 13.75, right? ताले now moving on to the next problem. Below is the given frequency distribution of weights of a group of 60 students of a class in a school. Okay, weight दे देला, number of students दे देला. तापरे एठी गुडाई जिनस पचाउची. देखो प्रथम कहूची हिस्टोग्राम तैयारी करो for this distribution and find the model value. Second कहूची prepare the
cumulative frequency पुणी both less than और more than way रे लिखिबो तापरे represent them graphically on the same graph paper, hence find the median. Okay, then coefficient of quartile deviation, then with the model and the median value as obtained in the point A and B, use an appropriate empirical formula in order to find the arithmetic mean of this distribution. Finally कहूची, if students with weight below 40 kg are eliminated from the frequency distribution, what will be the revised mean? Okay, so calculate the mean of the two rejected classes only and use the result obtained in C. Okay, so again गुड़ाए जिनस ये पचार. So प्रथम कथा आमे जहाँ जहाँ डाटा देइछि ताकू यदि लिखिबा, देखो डाटा हमको ऊपरे देइथिला like suppose 32 34 35 to 39, so continuous नथिला, so हमको continuous करबा पई एबे सजेबा को पड़िबो 29.5 to 34.5 34.5 to 39.5 and so on. ए हिसाब रे एबे हमें लिंकेज कर देला. then number of students which is nothing but the frequency. एबे less than और more than cumulative frequency. less than तो already जानी छो 3 जोगो 5 एगला केते 8, तापरे 8 जोगो 12 एगला 20, ए हिसाब रे लास्ट पहुंचलो 60 which is capital N, right? So capital N आमे एठी लास्ट पाउछु less than CF रे. more than CF रे capital N ऊपरे फर्स्ट हुई आसीबो. ए 60 रु 3 माइनस करो पाइगला 57, 57 रु 5 माइनस करो पाइगला 52. so ए हिसाब रे हमें लिखले कि गला. okay, so this is the required less than and the more than CF values. now moving further, हमको क्वेश्चन कहूची हिस्टोग्राम तैयारी करो. you see this is our histogram. केमती एटा तैयारी हला, this histogram is obtained on erecting the rectangles. एटी देखिबा को पाउछो rectangle गुडा जो आछी, erecting the rectangles on the class interval. this is our class interval तळे आछी एटा. okay, x value जोटा याको हमें x axis रे नउछु with the heights which is proportional एटा frequency निगला to the corresponding class frequency. so एटी मोड जदि हबो ताले केमती बाहर करिवो. प्रथम कथा पॉइंट O, दिस इज द ओरिजिन, आ एठी ए जो मैक्सिमम वैल्यू आछि याकू हमें देखो इंटरसेक्शन पॉइंट रु एबे परपेंडिकुलर आसी जाउछि x एक्सिस रे पॉइंट A रे टच कला. सो OA इज द मोड वैल्यू व्हिच इज 48. ओके, तापरे राइट साइड रे देखो लेस देन आउ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पई एठी हमें O गिव तैयारी करछु, राइट? सो हियर हमें ए O गिव रु देखिया को पाउछु जे इंटरसेक्शन पॉइंट होची एठी पॉइंट होची P. ओके, दुईटा जाको कर्व रो ना पॉइंट P रु हमें कोन करिबा, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा ऑन द x एक्सिस. सपोज एटा x एक्सिस को टच कला एट द पॉइंट Q. ओके, now this OQ which is 47.8 kg gives us the median value. okay, already एटा जानि छो previous class रे बतई थिली. तापरे let us draw parallel line. okay, parallel to x axis point P रो एठी एपट को जिबा हमें. okay, point P रो then एबे एटा आसी जिवो तमरो again here this is your 30 value is the Q2. okay, Q2 केमती, because एतिकी रु एतिकी डिस्टेंस जोटा कि तमरो OQ होतला. ओके, ए पॉइंट रु P पर्यंत डिस्टेंस से समान जिंस Q2, राइट? नाउ एठी देखो दुईटा पॉइंट आमे लोकेट करिबा गोटे रेस्पेक्टिव टू योर n/4 जोटा होची पॉइंट R पई आ 3n/4 जोटा होची पॉइंट S पई. ओके, सो एई पॉइंट R आउ S रु एबे आमे पैरेलल लाइन तैयारी करी कि एटा पाउछु. ओके, पैरेलल लाइन केमती देखो, दिस इज n/4, दिस इज 3n/4, सो दैट हमें R आउ S पाइला.
एबे परपेंडिकुलर पकेबा राइट एटा दुईटा पॉइंट रे टच कला एल आउ एम ओके एल आउ एम मतलब एठी ओ एल हे गला ओ एल इज q1 आउ ओ एम हे गला एठी q3 okay q1 will be 42.9 kg q3 will be 51.75 kg okay so the coefficient of quartile deviation जोटा हमको क्वेश्चन रे पचारुची ताकू एबे बाहर करिवा coefficient of quartile deviation formula है q3 minus q1 by q3 plus q1 यार वैल्यू आसीबो 0.0935 ओके एबे एम्पिरिकल रिलेशन को जिबा जोटा कहूची mod equal to 3 times of median minus 2 times of mean so that एथरो हमें mean calculate करि परिबा which will be 47.7 kg okay and finally the fourth option जोटा की होची suppose कहला x1 bar होची mean of the two classes with weight below 40 kg okay so x1 bar को हमें लिखि देबा ए हिसाब रे यदि यार फ्रीक्वेंसी बाहर करिबा देखो एटी बिलो वेट को हमें बाहर कर दीचु तारो फ्रीक्वेंसी तारो एफएक्स ओके सो दैट इट इज समेशन एफ हला 8 समेशन एफएक्स हला 281 ओके ताले x1 बार हेगला 35.125 kg और x2 बार हला मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन एलिमिनेटिंग द फर्स्ट टू क्लासेस ओके जोटा कि वेट बिलो 40 kg को हमें एलिमिनेट कर देला ताले n1 तो ऑलरेडी पाई सारचो x1 बार भी पाई सारचो n2 ही जब केते n1 को हमें जदी 60 रो माइनस कर देला तो 60 minus 8 which is 52 x2 बार हमको दरकार ओके सो एथि हमें यूज करि परिबा हमरो जनरल फार्मूला x bar equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देले x2 बार रो वैल्यू फाइनली पाई जेबो देखिबो 49.635 kg okay so this is all about the measure of central tendency जो कि आज हमें मोड विषय रे पढ़िला Thank you.